हेलो। तो कैसे हो आप? तो चलिए आज हम छोटा सा ब्लॉग अपने इस छोटे से परिवार के साथ एक पिकनिक के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। आज हम अपने एरिया से मालखेड, जो करीबन 2.5 से 3 घंटे का सफ़र 2 व्हीलर पे होगा, देखते हैं कैसा इसकी एक एंजॉयमेंट और एक झलक आपके साथ शेयर करते हैं। हम अमरावती के मालखेड गार्डन, जो करीबन पापड़ से यही कोई 60 to 65 किलोमीटर्स आता है, वहाँ का टूर करते हुए पहुँचते हैं और इसकी एक छोटी सी झलक, एक बच्चों की एंजॉयमेंट किस तरह होती है वो देखते हैं। Welcome to our onboarding video to our YouTube channel Chale with Rajmunir, where we explore the delightful experience of a picnic in the Vadali garden. Imagine a scene setting surrounded by blooming flower, lushy greenery, and the gentle creeping of birds, the perfect backdrop for relaxing there. As you spread out your picnic blanket under the shade of a tree, you can feel the stress of the day melting away, replaced by a scene of tranquility and calm. Unpack your delicious homemade treat and refreshing beverage ready to include in our feast our both the eyes and the taste bud. Take a moment to appreciate the beauty of nature around you, from the vibrant color of the flowers to the shooting rustle of the leaves in the breeze. Whether you are enjoying a solo picnic for some peaceful me time or sharing this experience with loved ones, the picnic in the garden is a wonderful way to connect with the nature and unwind. So next time you are looking for rejuvenating escape, consider packing a picnic basket and heading to the garden for a memorable outdoor experience. Thank you for joining us on this virtually picnic journey. Stay tuned for more inspiring content on our channel. Thanks once again. वडाली गार्डन एक बहुत ही खूबसूरत सा, प्यारा सा, एक छोटा सा पिकनिक पॉइंट है, जहाँ आप अपने फैमिली के साथ यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हो। साथ ही में आप आपके मनपसंद लंच या छोटा मोटा स्नैक्स घर से बना के भी यहाँ पे ला सकते हो, और किसी भी पेड़ के नीचे या यहाँ पे एक अलग सा लोगों के लिए खूब ही खूबसूरत सा बैठने के लिए, जहाँ पे लोग आराम से बैठ के खाना भी खा सकते हैं, का मनोरंजित जगह बना हुआ है। Just look at this gorgeous flower. The vibrant color and enhancing scenery instantly transports me to states of tranquility. It's amazing how the nature has incredible power to soothe the soul. As I walk through this scenery garden, I can't help but feel a sense of wonder and the way at the beautiful that surrounded me. The sunlight filtering through the leaves create a magical dappled effect on the ground, casting a warm glow on everything it touched. Taking a moment to pause, a soak of a peaceful atmosphere, I feel all my stress and worries melting away. It's moments like this that remind me of the importance of slowing down and connecting with the natural world
around us, exploring every nook and the cranny of this garden. I stumble upon a secret spot filled with exotic plant I have never seen before. Each plant seems to tell a unique story with its own shape, texture, and color palette that captivate my imagination. I also had a pleasure of chatting with the lovely garden caretaker who shares some fascinating insight about the different plant pieces and their care. It's truly amazing to see the dedication and love that goes into the maintaining this beautiful Vadali garden. As I say, बच्चों के लिए खूब सारे खेलने की चीजें जैसे घसरकुंडी, झूला, चक्कर, इवन मट्टी के बने हुए पुतले जैसे शेर, बंदर और घोड़े ये बच्चों को खास करके आकर्षित करते हैं। आप यहाँ अपने मोबाइल से या कैमरा लेके फोटोग्राफी भी कर सकते हो। एक बहुत ही खूबसूरत सा और फैमिली के लिए एक वीकेंड पॉइंट आपको हो सकता है। इसी साथ यहाँ पे वाटर पार्क भी है जिसमें आप बोट का एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी एंजॉय कर सकते हो। आप अगर फैमिली के साथ हो तो पूरे फैमिली के साथ जाके आप 10-15 मिनट की एक राइड लेके एंटरटेनमेंट कर सकते हो। Alright, folks, here we are in the lushy paradise of a plant, flower, tribal, linguistic, and misunderstanding. Let us chow in show. I asked for a fool, and I got a ghoul, a whole new level of blast in the translation of fool. Attempting to be a friend. A squirrel in Hindi, check the mistake. A cactus for my friendly palm tree. Double the check, the garden tree just kept on giving. I may not speak the language fluent, but hey, I smile in universal right. Let's see my character skill. Can I say the day? Who needs the word when you have laughter and the mutual appreciation for the absurdity of a life? Hilarious hijinks aside, the garden trip has been an eye-opening experience in more way than one. And there you have it, may darling, a comedic journey through the पिकनिक के लिए गार्डन में जब आप अपने परिवार के साथ टॉय ट्रेन का अनुभव करते हैं तो एक उस पल का एक अलग सा ही मजा होता है। ठंडी हवाएं में सफर करते हुए ट्रेन की सुरीली ध्वनि को सुनकर हम सभी मनोरंजन से भर गए। बच्चों की हंसी और खुशी ने इस अनुभव को और यादगार बना दिया। एक साथ समय बिताने का ये अद्भुत अनुभव हमेशा हमारी यादों में रहेगा। Embark on the whimsical journey with your family as you hop aboard the toy train for a picnic in the garden. The colorful train chugs along the track, winding its way through the lushy greenery and the vibrant blooms. As you sit back and enjoy the scenic ride, the sweet fragrance of flower fields, the air creating magical atmosphere for your picnic adventure. Laughing children and delightfully
adult alike revive in the simple joy of spending quality time together. Amidst the beauty of the nature, let the charming toy train whisk you away to the peaceful oasis where cheer the memory were made with every passing moment. बच्चों के लिए खूब सारे खेलने की चीज़ें जैसे घसरकुंडी, झूला, चक्कर, इवन मिट्टी के बने हुए पुतले जैसे शेर, बंदर और घोड़े ये बच्चों को खास करके आकर्षित करते हैं। आप यहाँ पे मोबाइल से या कैमरा लेके फोटोग्राफी भी कर सकते हो। ये बहुत ही खूबसूरत सा और फैमिली के लिए एक वीकेंड पॉइंट आपको हो सकता है। इसी साथ यहाँ पे वाटर पार्क भी है जिसमें आप बोट का एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी एंजॉय कर सकते हो। आप अगर फैमिली के साथ हो तो पूरे फैमिली के साथ जाके आप 10-15 मिनट की एक राइड लेके एंटरटेनमेंट कर सकते हो। यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए जंपिंग जैक जिस पे बच्चे कूद सकते हैं, ऐसा सराउंडेड और सेफ्टी गार्ड की तरह एक एरिया भी है जहाँ पे आप उसका सिर्फ एक याद रखना, हर एक बच्चों का वहाँ पे अगर कोई टिकट कलेक्टर नहीं भी रहा, अगर आप वहाँ पे किसी बच्चे को छोड़ दिए तो सडनली वहाँ पे यही चीज़ बुरी है कि अचानक से आके वो कोई भी आपसे 40 रुपीज़ पर कैंडिडेट का हिसाब लेते हैं। तो थोड़ा उसकी केयरफुली रखना, उसका जो पेमेंट है वो पे कर देना, लेकिन पहले ये इन्फॉर्मेशन निकाल लेना कि वहाँ पे वो उसकी टिकट अवेलेबल है या नहीं। वड़ली गार्डन के अंदर आप म्यूजिक के साथ रेन डांस भी कर सकते हो। स्पेशली जो स्कूल स्टूडेंट या कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं ये अपनी मज़ा लेने के लिए उसमें उस सराउंडेड एरिया में जाते हैं और रेन डांस का भरपूर मज़ा लेते हैं। देखा जाए तो फैमिली के साथ आप भी एंजॉय कर सकते हो और चारों तरफ से वो एक एरिया सराउंडेड किया हुआ है जिससे एक पूरा पैक करके वो अलग सा ही है, उसे कोई भी मतलब देख नहीं सकता। उसके लिए अगर आपको जाना है तो उसका जो भी टिकट फेयर है वो टिकट फेयर लेके ही आपको अंदर जाके तो रेन डांस का मज़ा म्यूज़िक के साथ आप ले सकते हो। All right, folks, here we are in the lushy paradise of a plant, flower, verbal, linguistic, and misunderstanding. Let us chow in show. I asked for a fool, and I got a ghoul, a whole new level of lost in the translation of fool. Attempting to be a friend. A squirrel in Hindi, check the mistake, a cactus for my friendly palm tree. Double the check, the garden tree just kept on giving. I may not speak the language fluent, but hey, I smile in universal right. Let's see my character skill, can I say the day? Who needs the word when you have laughter and the mutual appreciation for the absurdity of life? Hilarious hijinks aside, the garden trip has been an eye-opening experience in more way than one. And there you have it, made darling a comedic journey through the heroic culture, miscommunication, and the universal language of laughter. Until next time, stay hilarious and always remember to stop and smell their fool in Hindi. Spoiler alert, I am about as fluent in Hindi as the penguin in a sauna. But hey, where the fun?
is doing things the easy way. I am right. Goodbye to this in a chatting garden. I can't help but feel grateful for the opportunity to experience its beautiful and serenities. I hope this little virtual trip has brought a touch of joy, inspiration to your day.